So, good morning, students. This is the first session of transformer induction motor. And before starting with the course, I would like to introduce the course and the course details of this particular course. So, this is, of course, semester 3, and the course name is Transformer and Induction Motor. So, in Transformer and Induction Motor, uh, this is course category also, it is very important. It is DSC. DSC means it is discipline oriented. Okay. Earlier basic subjects were, I think there was some basic written or common subjects were written. This is discipline oriented subjects. Duration of the semester is 16 weeks semester. Learning and assessment scheme, as we know that there are 4 lectures per week in the in this course. Then there will be lab. Even E2 हमारे पास 2 batches है, so 2 hours to each. Again there will be self learning assessment of 2 hours. So those 2 hours are expected. You are expected to do this 2 hours work at your home, okay, or after the college. Then credits are 4. 4 plus 2 plus 2 becomes 8. 8 divided by 2. That is the credit. Then the final paper duration will be of 3 hours. थियोरी में दो पार्ट्स होते हैं. एक है अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब पीटी, वो 30 मार्क्स की होती है, एंड समेटिव असेसमेंट. ऐसे मींस फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऐसे मींस समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट मतलब जो एंड में होता है, एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जो कंटिन्यूअसली होता है. तो समेटिव असेसमेंट एंड सेमेस्टर का पेपर 70 मार्क्स का रहेगा, दोनों की एडिशन होगी 100. ओके. पासिंग के लिए 100 में से 40% मतलब 28 के ऊपर चाहिए, नहीं 40 के ऊपर चाहिए, एंड एसएबी प्लस एंड चाहिएगा और नहीं. एंड थ्योरी में भी आपको 40% मोर देन 28. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 30 मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 मिले तो यहाँ पे 10 मिल के पास हो जाएंगे, ऐसा. ओके. मेनी ऑफ यू हैव might have observed it in your results. Then there will be practical. FA practical मतलब जो continuously हम assessment करते हैं. practical हर practical को 10 मार्क्स वाले होते हैं, उसमें से maybe 4+4+2 का distribution होता है. So that is formative assessment because वो continuously होता है practical का. And ऐसे practical 50 मार्क्स मतलब ये practical exam है 50 मार्क्स का जो end of the semester में होगा. ओरल नहीं है इसको बिकॉज प्रैक्टिकल में दोनों कंपोनेंट होते हैं, प्रैक्टिकल एंड ओरल. Then there will be SLA. SLA marks are 25 and total marks are 200. Okay. So this is the marks distribution and assessment scheme for the PIM subject. So as I said, SLA जैसे हम पहले ही first day पे discuss and I'll give you the duration of 1 week. So अभी ये week में I don't know, but next week Saturday तक I want confirmation from you कि आपको SLA में क्या करना है. Then we discuss amongst ourselves, we'll see the majority and then we'll take the decision. But most probably, I feel that it should be notebook only because it has given me good results till date in all the subjects. ऐसा नहीं है कि सिर्फ first, second semester में, but in all the subjects right from first semester to 6 semesters. Okay. So coming to the transformer induction motor. So this course deals with machines. ये machines का first subject है. And machines के first subjects में we have 2 types of machines. One is the transformer and another is the induction. Now in many other institutes, if you observe their syllabus and their शायद आपके books जो आते हैं Tech Max, वो MSBT के लिए बनाते हैं, तो वो MSBT में भी शायद DC motor and transformer का एक subject. But specifically in at least in our institute, transformer and induction motors are kept together. The very reason is उन दोनों का basic working principle है. Okay, so that is the reason we have transformer plus induction motor. Plus both are AC machines. AC मतलब सबको पता है. Good. So their concepts, principles and operation. Transformer is a vital link in the power systems and induction motor is the cheapest motor available. It is a general purpose motor. Wherever you go, most of the time 90% you will see induction motor भी use करते हैं. It might be single phase or 3 phase. Okay. आपके घर का जो पंप है that is also a single phase induction motor.
The knowledge and skills obtained by students will be useful to him or her as a supervisor or technician in performing the technical functions. Okay. So what are the skills and competencies are expected to attain? That you can perform various tests on the transformer and induction motor, and you can select the appropriate type of transformer and the starting and speed control methods for induction motors. We'll go in detail with them. So these are the course outcomes. So इसमें से जो पहले 3 course outcomes है, they are related to transformer. half है सबसे. So first 3 outcomes are related to transformer, जिसमें से first is related to mostly single phase transformer. Next is related to something called as auto transformer. Auto transformer ये ऐसा है जो हमने already use किया है lab में. We must have. That is nothing but auto transformer. Third is related to 3 phase transformer. 3 phase transformer आप अलग से नहीं पढ़ेंगे because उसका basic working principle single phase के जैसा ही है. Fourth one is related to the 3 phase induction motor. Fifth one is related to the speed control and starter because induction motor का अगर speed control नहीं किया तो हम industry में क्या use करेंगे? We do not want induction motor to run on the same speed. And last one is related to the single phase. Okay. So दोनों में एक बहुत ही there is a difference that transformer में will be starting with single phase transformer, and those all concepts we are going to apply for 3 phase transformer. It will automatically get applied to 3 phase transformer, and 3 phase का जो क्या extra है वो हम पढ़ेंगे. But induction motor जब हम start करेंगे तो हम 3 phase induction motor से start, and then we will develop the extra concepts and whatever principles are required for single phase induction. Because single phase transformer, it is basic, it is easier to understand, and then we मतलब basic fundamental develop करने के लिए वही चाहिए, and 3 phase motor का fundamental develop करने के लिए हमें 3 phase induction, not a single. Okay. This is mapping. You can refer it later on. Now coming to the contents, as I said, first chapter जो है वो single phase transformer का रहेगा. उसके जो भी tests है, जो भी numericals है, all those. Then the auto transformer, then the 3 phase transformer, then comes 3 phase induction motor. Induction motor हम 3 phase से चालू करते हैं. Then the starting and speed control, and at the end single phase induction. Okay. Then there are practicals also to perform, and इसके practical exam भी होने वाले हैं. So पहले वाले practicals are quite easy. Then as you go ahead, there will be the practicals of induction motor. तो ट्रांसफॉर्मर अगर आपको समझ में आया है तो आपको इंडक्शन मोटर समझने में आसानी होगी. बट ट्रांसफॉर्मर में ही आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स में नहीं गड़बड़ है तो फिर इंडक्शन मोटर समझ. तो दैट इज द रीजन कि आपको ट्रांसफॉर्मर ही अच्छे से आना चाहिए, राइट? एंड देन as I said, there will be assignments SLMA according to your wish and of course my wish. We are going to decide what is to be there in the SLA, and these are the books, reference books for the transformer. So most probably I will be preferring this PS Bimra, and I have one more book called as it is foreign author MG Say AC Machines. Wherever required, I will refer that. At diploma level, most of the students refer BL Theresia. I think you have referred BL Theresia part 1 for ACS BCS, right? There is one more author named as VK Mehta. VK Mehta का machines का book है या नहीं मुझे नहीं आइडिया है, but अगर वो होगा भी I want you at considering the diploma level. I don't want, but like अभी क्या कर सकते हैं? So considering that, I want you to refer only BL Theresia और JB Gupta. JB Gupta जो हमने पावर जनरेशन के लिए यूज किया था वो अलग था, ऑथर सेम है.
but for machines there is electrical machines from G. Okay, I am going to refer PS Bindra because PS Bindra के जो concepts है, because machines तो same है ना, दो author अलग अलग concepts नहीं बताने वाले. So PS Bindra में और थोड़ा डिटेल में दिया है. Maybe when you go for degree तो आपको ये PS Bindra यूज करना. So when I try to explain you the concepts, I have to go one step ahead. So मैं PS Bindra and MG से पे अभी हूँ. Okay. You can prefer these two books. You can take it from the library. Library में book bank में available है. I think BL Thereja is available. I am just doubtful for JV Gupta, but BL Thereja तो है ही. Okay, so you can refer it from the library. All right. Whatever necessary. मतलब जहाँ पे ऐसा मुझे लगे कि ये टॉपिक PS बिंद्रा से ही या एनजी से ही पढ़ना कंपल्सरी है. So I dictate you in class. That part I dictate. और जो बहुत ज़्यादा important है जैसे बेसिक वर्किंग है तो I dictate. All right? Okay. Fine. These are some learning resources, online learning resources which you can refer if you wish to. Of course, इतने ही learning resources नहीं होते हैं. You also know you can search on the internet and you will get many learning resources. Then there will be assessment methodology. आपको क्या क्या करना है एक केस में, that everything is written there. अरे सो जैसे कि कहा फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जो कंटिन्यूअस असेसमेंट है उसके हमारे पीटीआई में पीरियोडिकल टेस्ट, रूब्रिक्स फॉर सीओ असेसमेंट मतलब जो प्रैक्टिकल के असेसमेंट होते हैं तीनों इस पे 4+4+2 वो वाला असेसमेंट, सेल्फ लर्निंग, टर्म वर्क, देन दी समेटिव असेसमेंट में आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम आएगा एंड प्रैक्टिकल एग्जाम आएगा. राइट, सो आई थिंक दैट मच पार्ट ये वेटेज है. एग्जाम ओरिएंटेड जो आप पढ़ाई करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कौन सा चैप्टर कितने वेटेज के लिए है. Okay, so most of the papers, at least my 100% papers are referred to this one. इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है. ठीक है, क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं बट ये डिस्ट्रीब्यूशन आई मेड. ठीक है, सो यहाँ से आप अभी भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कंपलसरी चैप्टर पढ़ना है, कौन सा ऑप्शन में डालना है. आप देख सकते हैं बट वो ऑप्शन में डाल के फिर बाद में क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि कभी ना कभी तो करूंगा. Right? Okay. So this was the brief introduction about the course. Okay. Today we will start just the introduction of the machines which we are going to learn first. Which is the first machine? Are you making the first machine for single letter? Basically transition. जब हम concept पढ़ने वाले हैं, that time we will not differentiate for single base, three base, because दोनों का concept same है, and that we are going to use the same concept for three base and three base. Single base we use other sets and so I made some shading for the lecture. So where have you heard the phrase or word called transform? कहाँ पे सुना है transform? ऐसा आपने देखा है? Now you are in second year, तो hesitate करने की जरूरत नहीं है. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा
Yeah. Powerhouse. And where have you seen this powerhouse? Railway. So that is called as substation. That is not powerhouse. The difference अभी आया ही है topic. Powerhouse means जहाँ पे power generate होती है. कौन सा powerhouse या power plant हमने देखा है? So that is a power plant जहाँ पे power generate. Substation में क्या होता है? धान में ट्रांसफार्मर था, देखा था हमने. ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या है? It steps up or steps down the voltage. So good, at least you know this. Step up किसको करता है वो? वोल्टेज को. और सिर्फ वोल्टेज स्टेप अप करता है. What are the parameters of electrical energy? Let me write that. Parameters of electrical energy क्या है? Volt. First is voltage. Okay. Then yes, current. Then power. और that's it. आपके घर पे बिल आता है, वो बिल किसका भरते हो? यूनिट. Energy. Okay. So you are saying that transformer steps up or steps down voltage, correct? What about others? Okay, we'll come to it later. Step up and step down करने का फायदा क्या है? क्यों करना पड़ता है हमें step up step down? ट्रांसमिशन में लॉसेस कम होते हैं हाई वोल्टेज पे डालने. So हमने एक मटेरियल्स में आई गेस ट्रांसमिशन वो कौन सा कंडक्टर था अपना? ACSR कंडक्टर. तो ACSR कंडक्टर्स के बारे में जब भी हम डिस्कस कर रहे थे, so that time we discussed about बराबर. इसके बारे में हमने गीजर में भी डिस्कस किया था, इसके बारे में हमने टोस्टर में भी डिस्कस किया था, वो केटल में भी था. तो वहां पे उसके बारे में क्या डिस्कस किया था? आयरन, केटल, गीजर, आई स्क्वायर आर लॉसेस के बारे में क्या डिस्कस किया था? तभी वहां पे क्या आउटपुट क्या था हमारा? हीट. तो दिस इज नथिंग बट हीट. तो वहां पे हमें ये चाहिए थे ज्यादा, तो हमने क्या किया? वहां पे ज्यादा चाहिए थे इसलिए करंट एरिया बहुत ज्यादा. हाँ, यस, वेरी गुड. रेजिस्टेंस हमने ज्यादा जो कंडक्टर्स के लिए, कौन से कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है? टंगस्टन और नाइट्रो. वैसे वाले मटेरियल हमने यूज किए थे जिसकी वजह से हमें ज्यादा रेजिस्टेंस मिला और जिसकी वजह से आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से आई स्क्वायर आर टी हीट एनर्जी मुझे मिली. बट राइट नाउ इन पावर सिस्टम डू आई नीड दिस लॉसेस? इसको लॉसेस कहते हैं ना पावर सिस्टम, क्योंकि ये हमारे को यूज के नहीं है. कोई नहीं ट्रांसमिशन लाइन पे जाने वाला कपड़े सुखाने के लिए कि जहाँ पे हीट एनर्जी चाहिए, या वहां पे पानी गर्म करने नहीं जाना है. बाबा यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जरा ट्रांसफार्मर के पास जाओ, पानी रखो, गर्म हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं होता. दैट इज द बाय प्रोडक्ट एंड दैट इज एक्चुअली द वेस्ट और लॉस. We do not want this loss to happen in the power system. But we cannot have resistance or we cannot have a conductor having zero resistance. Can we have that?
देयर आर कंडक्टर्स कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर्स, बट उसका भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं है एंड दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। वो हम ट्रांसमिशन नेटवर्क में पावर सिस्टम में कभी इंप्लीमेंट करेंगे, वो एरा अभी आना बाकी है। सो वी एटलीस्ट विल सिलेक्ट द मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस कम हो। ऐसे कौन सा मटेरियल? एल्यूमिनियम, कॉपर। कॉपर विल बी मोस्टली प्रिफर्ड। सिल्वर का भी तो कम है, so silver कम है, लेकिन वो we cannot use it for the power system purpose because it is very costly. So we prefer copper और aluminium for this purpose. And उसको strengthen करने के लिए हमने क्या use किया था ACSR में? Steel. Okay, alright. So there we have, एक बात तो हमने कर ली कि हमने resistance कम by selection. Okay. तो मेरा रेजिस्टेंस कम हो गया, लॉसेस कम होंगे कंपेयर टू अदर मटेरियल इफ आई यूज। बट फिर भी मुझे लॉसेस और भी कम करने हैं ना, बिकॉज़ इट इज अ लॉस, आई डू नॉट वांट इट, आई वांट टू मिनिमाइज इट। तो अभी रेजिस्टेंस में तो लिमिटेशन आ गया, कॉपर के नीचे हम नहीं जा सकते हैं कंडक्टिविटी के और रेजिस्टिविटी के नीचे। तो हम क्या कर सकते हैं? करंट डिक्रीज कर सकते हैं, ओके। बट आई नो दैट this power is equal to V into I. मतलब जो पावर, सपोज आई हैव दिस लैम्प और उसको चलाने के लिए मुझे कुछ 5 वॉट का पावर चाहिए, तो 5 वॉट में अगर 230 वोल्ट मेरा स्टैंडर्ड वोल्टेज है, तो 5 डिवाइड बाय 230 जितना करंट आएगा, उतना करंट अगर मैंने उसको नहीं दिया वो डिम हो जाएगा, बराबर ना? तो कोई भी लोड का अगर उसको रेटेड पे चलाना है, वोल्टेज एंड करंट सेट है, वोल्टेज 230 है डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए मे बी 3 फेज होगा तो 415 होगा, दैट इज फिक्स्ड। उसको हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट मशीन और दैट apparatus इज मेड टू रन ऑन दैट वोल्टेज। तो अगर हम करंट कम करेंगे तो पावर कम नहीं जाएगी, कम जाएगी ना पावर। तो करंट कम करना, ओनली कम करना इज द ऑप्शन। पावर हमें सेम चाहिए और हमें करंट को कम करना है, क्या कर सकते हैं? सो इफ आई एम रिड्यूसिंग द करंट, पावर को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे वोल्टेज को बढ़ाना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई नीड टू स्टेप अप द वोल्टेज। So when I am saying that voltage is getting stepped up, obviously my current is stepping down in order to maintain the power. इसमें किसी को कुछ डाउट है? Should I repeat? Repeat करना है? I said that there are I square R loss. यहाँ से चालू करो ना. I square R loss happening in the transmission distribution in the power system. तो उसको कम करने के लिए आइदर मतलब वन ऑप्शन इज टू रिड्यूस आर, बट कहाँ से उसको रिड्यूस कर सकते हैं? कॉपर की रेजिस्टिविटी, उसके नीचे सिल्वर वगैरह वो हम नहीं यूज करते। सो देयर आई गॉट लिमिटेशन कि मैं इतना ही उसको रिड्यूस करूँ। अभी बचा कौन? करंट। तो करंट को अगर मैं रिड्यूस करूँ तो पावर कम हो जाएगी ना, बिकॉज पावर इज V into I. So if I am reducing the current in order to reduce the I square R loss, करंट को अगर मैं कम कर रही हूँ सो दैट मेरा I square R loss भी कम हो, तो मुझे वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा in order to keep the power constant. And that is why there the transformers come into picture, जहाँ पे वो पावर वोल्टेज को स्टेप अप करता है and automatically currents get stepped down. तो ये स्टेप अप कहाँ करेगा? जहां से हमें लॉसेस को कम करना है। अभी लॉसेस कहाँ से शुरू होंगे?
ये आई स्क्वायर आर लॉसेस कौन से पॉइंट से शुरू होंगे? पावर सिस्टम का वन लाइन डायग्राम किया है ना तुम लोगों ने? सिंगल लाइन डायग्राम किया था? नहीं किया है? सबसे पहले क्या आता है? पावर इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम, पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम क्या आता है सबसे पहले? जनरेटर आता है। ओके, सो दिस इज अ जनरेटर। ये जनरेटर शायद मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ वोल्टेज विच इट कैन जनरेट इज आई थिंक 3.3 kV और लेट्स से 6.6 kV। वो डानो का कितना था? 6.6 kV जनरेटर जनरेट कर, ठीक है। इसके बाद क्या चालू होता है? हमारा ट्रांसमिशन। जनरेट हो गई इलेक्ट्रिसिटी, अब उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो ट्रांसमिशन चालू होगा। सो जनरेटर जनरेट करता है 6.6 kV। क्या हम 6.6 kV पे के ऊपर ही हम ट्रांसमिशन करते हैं क्या? कितने में करते हैं? 220 और 440। So we go for 220 डिपेंडिंग अपॉन कौन से रीजन में है वो आपको कहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी लेके जानी है। सो वी प्रिफर दिस, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है आगे का, नाउ आई एम शोइंग सिंगल लाइन ओनली बिकॉज इट इज सिंगल लाइन डायग्राम, 3 फेज होते हैं। सो दिस ट्रांसमिशन टू हैपन, ये आगे आ गया इधर, दिस ट्रांसमिशन टू हैपन एट लेट्स से 132 kV बिकॉज वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा, लॉसेस कम। सो ये आगे जो लाइन जाएगी अप टू डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे लॉसेस मेरे कम हो जाएंगे। सो व्हाट शुड आई डू इन बिटवीन? आई शुड पुट अ ट्रांसफॉर्मर जो जिसका इसको कहते हैं वोल्टेज रेशियो, स्टेप अप करे वोल्टेज को 3.3 kV या 6.6 kV से 132 kV। If you observe, I have drawn little lesser number of turns here and more number of turns. Number of turns जहाँ पे ज्यादा है वहां पे वोल्टेज ज्यादा मिलता है। अगर इसको कहते हैं प्राइमरी साइड, इसको कहते हैं सेकेंडरी साइड, we will discuss that again in the transformer. But ये जो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बिकॉज इट इज स्टेपिंग अप द वोल्टेज। ओके, सो ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन तक आ गया मेरा 132 kV। आई थिंक इट इज इन अंधेरी, जो अपना रिलायंस का वहां पे स्टेशन है, और क्या कहते हैं उसको, सिप्स के यहाँ पे जो स्टेशन है आरे कॉलोनी का, रिलायंस का, उसका नाम आरे कॉलोनी का, रिलायंस अदानी आरे कॉलोनी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। तो वहां पे 132 kV आ गया। वो जो बता रहे थे ना आप लोग को धानु में, कि वहां से धानु में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो सीधा उधर जाती है, देयर इज अ सेपरेट प्राइवेट लाइन फॉर इट। ओके, सो 132 kV उधर आ गया। अभी 132 kV कौन यूज करते हैं? मैं मेरा मोबाइल चार्ज कर दूं क्या 132 kV पे? मुझे कितना चाहिए? 230। 230 मुझे कहाँ से आएगा? वो अपना जो वहां पे पीछे ट्रांसफॉर्मर बैठा हुआ है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है, वो सब स्टेशन, एक छोटा वाला सब स्टेशन आता है जो आपके बिल्डिंग के नजदीक भी है, तो उस पे लिखा रहता है कुछ 11 kV, ऐसा कुछ 11 kV या 6.6 kV को स्टेप डाउन करता है 453 पे सिंगल फेज 230। तो ये कहाँ से हुआ भाई? 132 kV को हमें पहले क्या करना पड़ेगा? अभी 132 kV वी कैन नॉट यूज ना, वी और इवन इंडस्ट्रीज कैन नॉट यूज, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो स्टेप डाउन करने के लिए आई हैव अ ट्रांसफॉर्मर जिसके प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कम है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, इट माइट बी लेट्स से 132 बाय 11 kV बिकॉज 11 kV भी कहीं कहीं पे डायरेक्टली यूज होता है फॉर बल्क यूजर्स और इंडस्ट्रियल यूजर्स, ठीक है।
एंड आफ्टर दैट सो दे कैन डायरेक्टली यूज इट फ्रॉम देयर एंड यहाँ से नीचे हम और एक हमारा ट्रांसफार्मर जो हमारे घर के नजदीक रहता है, लेट्स से इट इज 11 kV टू 415 वोल्ट, ठीक है, एंड इसके नीचे आपका कंज्यूमर डोमेस्टिक कंज्यूमर और इवन कमर्शियल। समझ में आया सिंगल लाइन डायग्राम? अभी दूसरा सब्जेक्ट है ईटीडी, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हाउस में वही पे शुरुआत है सब्जेक्ट। So why we use transformer? Because we want to step up and step down the voltage in order to keep the I square R losses minimum. Plus अगर आपने सोचो वहां से ही आप 6.6 kV से चालू करेंगे धानुक से, तो वो वोल्टेज बीच में अगर लोड देके आ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ही वो 1.1 kV इतना हो जाएगा। इसके लिए वो भी अवॉइड करने के लिए we use this stepping up and stepping down. Okay, so that is the main reason कि हम ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं और हमें सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर से दिखते हैं पावर सिस्टम में, because they are the main players of the power system. Okay, जनरेटर एक ही रहेगा, ट्रांसफार्मर उसके नीचे 5-6 रहेंगे। Alright, should we break 5 minutes?